Hello everyone. January is the World Cervical Cancer Awareness Month. That is why today we are going to talk about cervical cancer and the HPV vaccine, which is nowadays available to prevent or to minimize the risk of getting this cancer. So though globally it is the fourth most common cancer in women, and in India the second most common cancer after breast cancer, still there are a lot of myth and misinformation about this cancer. So I'm Miss Shoma Banerjee. I am a feature journalist, but today I am here as the current president of Inner Wheel Club of Navi Mumbai Sunrise. It is a part of world's one of the largest women's voluntary services organizations, and we work in various verticals of community welfare services. And I thank Apollo Hospital for organizing this interview session. I'm sure we'll get a lot of useful information about cervical cancer and its prevention. And from Dr. Bindu Case. Dr. Bindu Case is a consultant obstetrician and gynecologist at Apollo Hospital. So, Doctor, I would like to first ask you a very basic question, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को cervix इस वर्ड का भी मीनिंग पता नहीं है और cervical cancer ये बहुत सारे confusion है. So, just basic information if you can give. Okay. So, regarding cervix, so every cervix is nothing but it is a आपको सबको पता है कि यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड द वूम्ब या थैली बोलते हैं या पिसवी बोलते हैं मराठी में. उसका मुंह या फिर नेक ऑफ द वूम्ब इज कॉल्ड द सर्विक्स. सो इसका सर्वाइकल कैंसर बिकॉज काफी बार सर्वाइकल रिब रहता है, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा रहता है, लोगों को पता नहीं रहता कि सर्विक्स क्या है. सर्विक्स इज नथिंग बट इट इज द नेक ऑफ द वूम्ब और पिसवी का मुंह, मतलब उसको बोलते हैं बच्चेदानी का मुंह को बोलते हैं सर्विक्स. एंड सर्वाइकल कैंसर मींस कैंसर ऑफ द नेक ऑफ द वूम्ब. So how do women get this HPV virus, which nowadays is known causing this cancer? Okay, so first of all, this cervical cancer, as you said, is a disease which is especially in the rural area, it is so common. Okay. So this especially the cervical cancer, 90% of the cervical cancer is caused by this virus, which is HPV virus, which is called the human papilloma virus. Yeah. Okay, this enters the body through sexual activity. Okay. So men have this virus in their external genitalia and or the इनका organs में रहता है, and during unprotected sexual intercourse you can get this virus. And once it enters the body, मतलब वो it's a virus. Virus doesn't live on their own. What they do, virus तो host cell या जो रहता है ना human cell के साथ उसका integrate करके then they cause some changes in the cell and cellular abnormality होता है. So cancer is nothing but the cell number increase and cell becomes abnormal. So this virus once it enters the human cell या cervix cell को मतलब it stays dormant या sleeping phase उनका रहता है बहुत साल. And sometimes the human body का reaction रहता है उसको shed भी कर देता है. ऐसा नहीं कि सबको जो HPV वायरस इन्फेक्ट हो गया सबको कैंसर नहीं होता. तो ह्यूमन बॉडी इज केपेबल ऑफ डीएक्टिवेटिंग द वायरस एंड देन वो शेड भी हो जाता है. बट किसी मे बी वंस वायरस आता है ऐसा नहीं कि अगला मतलब 2 साल में कैंसर नहीं होगा. इट इज लाइक द वायरस कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर इयर्स टुगेदर एंड समटाइम्स इट इज शेड ऑफ आल्सो. बट इन सम वीमेन दिस वायरस विल इंटीग्रेट विद दैट सेल या जो इनके साथ रह के होस्ट सेल के साथ होके वे सेल में एब्नॉर्मैलिटी हो जाता है, बहुत सारा चेंजेस आता है सेल में, देन अल्टीमेटली इट टर्न्स इनटू कैंसर. सो इट्स वैक्सीन इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है जो अभी HPV वैक्सीन की बात हो रही है? यस, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट बिकॉज ऑल कैंसर्स के लिए वैक्सीन नहीं रहता. Cancer is nothing but cellular abnormality or cell number or abnormal cells हो जाता है. The cervical cancer is one thing which can be eradicated by giving this vaccine. So HPV vaccine, see HPV vaccine जो available है 90% of cancer of the cervix can be prevented by this vaccine.
Okay. सो कैसा है सर्विक्स कैंसर बाकी चीज़ों से भी हो सकता है बट 90% ऑफ द कैंसर्स ऑफ द सर्विक्स आर कॉज्ड बाय दिस एचपीवी वायरस सो आप वैक्सीन देते हैं तो इवन बिफोर द सेक्सुअल एक्टिविटी बिगिन हो जाता है इट ऑलमोस्ट गिव्स अ फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वायरस से जो सर्वाइकल कैंसर हो जाता है उससे दे गिव इवन 100%. So what age group is the right age group to take this Okay. vaccination? Yeah. So see, age group is obviously because one before sexual activity is the best period to take the vaccine. So normally the recommended age American college to obstetrician gynecologists they recommend between 9 to 26 years. Okay. So, but the best age is to tap the population, adolescent population, before they start their sexual activity. So, 11 to 12 years is the recommended age by the CDC, Center of Disease Control. So, 9 to 26 years you can give, but before 26 years it is better to start the vaccine. But 11 to 12 years में देने का एक फायदा और है कि because जो पूरा अपना बच्चों का जो vaccination schedule it is completed by 12 years. You understood? Yeah. So 11 to 12 years में वैक्सीन देते हैं तो वो पूरा शेड्यूल ही कंप्लीट होता है. One more advantage is that if you are giving between 11 to 12 years, you need to give only 2 doses. Okay. After that we usually give 3 doses. Okay. That is 0 dose and 2 months के बाद और 6 months के बाद. Okay. इसमें तो first and second doses only required. But even one more question you can have कि can women already sexually active उनको ये vaccine फायदा करेगा या फिर वो भी है because I said 100% effectiveness is before they get the infection of HPV vaccine. But still it is now recommended that studies have shown even you can give up to 45 years also. Okay. So what happens ना even एक person को HPV virus suppose infect हो गया तो there are virus को आपको पता है बहुत सारा strains रहता है. She may be infected with 1 or 2 or 3 strains only, but cancer can be caused by many strains. So this vaccine जो आप देते हैं वो 9 strains का vaccine आया है. So even if you give the vaccine, she may be getting protected against the cancer by the other strains. Okay. You understood? No? So that's how 46 years that it is valid. Yeah. तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ले सकते हैं प्रेग्नेंट वीमेन? See, pregnancy में usually it's not recommended. Okay. Because pregnancy में अभी तक studies इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि बेबी को वो मतलब वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता. बट if patient without knowingly और inadvertently उसने वैक्सीन लिया, but that doesn't mean कि pregnancy को हम लोग को मतलब निकालने का है ऐसा कुछ नहीं. You did not remove the pregnancy, even if she got the vaccine without knowing. But usually, if patient is pregnant, we wait till she finishes the delivery, and that, again you can start the vaccination. इसमें एक और है पेशेंट ने प्रेग्नेंट होने के पहले एक डोज लिया उसका डोज आया तो व्हाट यू डू इन दैट केस आल्सो वी वेट टिल मतलब द डिलीवरी इज ओवर एंड देन यू फिनिश द शेड्यूल. ओके. सो यूजुअली प्रेगनेंसी में इतना स्टडीज नहीं हुआ है सो दैट यूजुअली वी डोंट रिकमेंड. ओके. And screening, how important is that? Despite taking the vaccine, one should still go for screening. Obviously, even after taking the vaccine, women should go for screening of cervical cancer. As I said, 90% of cancer of the cervix is caused by HPV virus. But cancer cervix can be due to other causes also. And इसमें तो screening का फायदा हो जाता है. तो women should start screening और screening का बहुत सारा तरीके. One is pap smear. So pap smear is an easy technique. Most of you might be knowing because health checkups में होता है. It is nothing that uterus का ऐसा cervix या neck of the womb को हम लोग एक instrument से देखते हैं speculum instrument we introduced into the vagina. See the neck of the womb and उससे जो secretions है ना that we take that and then subject for microscopy. इसमें तो cells पता चलता है तो उसमें कुछ abnormality है या कुछ है even HPV का changes भी मालूम पड़ता है. That is called pap smear. तो pap smear is very important for women to take. And once usually recommend मतलब 26 years के बाद it is important for women to have this or especially sexually active to have this pap smear. Usually we recommend every 3 years.
But if it is, we can do HPV testing also for this women. That is another way of screening. If you are Okay. doing both HPV testing and pap smear together, Okay. then you need to do only 5 years. Okay. So every 5 years one can do both the Yeah, if you are doing tests. both, that is the dual testing we say. HPV plus pap smear करते हैं तो 5 साल में ही करने का. If you are doing only the pap smear, 3 years. 3 years में. काफ़ी लोगों में डर, काफ़ी औरतों में मैं देखती हूँ एक टाइप का apprehensions and fear is there. Is it painful this test and बहुत सारे inhibitions है कि नहीं करना है. Exactly. But see, as if when you are coming prepared, what are you going to do? If the doctors anyway we explain what we are going to do, and mind से भी वो पहले से उनको पता है क्या होने वाला है, तो we position the patient मतलब nicely and उनको मतलब we tell them what we are going to do, and discomfort कम करने के लिए we use jelly also, and मतलब we while talking and elevating her fears we do the procedure. तो इतना तो painful, little bit discomfort may happen, but most of the times it's not painful. हाँ, मैं भी बोलूँगी कि ये मैंने खुद कराया है तो इतना पेनफुल नहीं है और इतना डरने का भी कारण नहीं है. स्लाइट डिस्कम्फर्ट जो हम सह सकते हैं, बेयरेबल है, इट्स बेयरेबल. सो वन शुड नॉट शाई अवे. शर्माना या डरना नहीं चाहिए ये टेस्ट कराने में. तो और ये मेनोपॉजल औरत के लिए भी जरूरी है, जो मेनोपॉज हो गए हैं, हुआ थ्रू मेनोपॉज. Yes. हाँ, मतलब काफ़ी लेडीज़ का ये रहता है सवाल कि अगर मेनोपॉज हो गया है तो फिर क्या जरूरत है, आई एम टू ओल्ड फॉर इट, समथिंग लाइक दैट. इसमें वो मेरा जो फर्स्ट आंसर है वो मैं बोलूँगी, एचपीवी वायरस काफ़ी दिन बॉडी में रहते हैं एंड दे स्लीप फॉर अ डॉर्मेंट, बट दे कैन गेट एक्टिवेटेड एंड फिर दे कैन कॉज कैंसर. सो एक लेडी जो है उसका अगर समझो रेगुलर, अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया वी डोंट हैव अ रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम. तो बट इन अदर कंट्रीज लाइक यूके, अमेरिका, उसमें सब एक रेगुलर स्क्रीनिंग शेड्यूल करते हैं, जैसे 26 इयर्स में जो लगातार करते रहते हैं. उनको अगर सी सपोज ए लेडी इज डूइंग ऑल दिस अप टू एज ऑफ 65 इयर्स एंड उसको कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ तो शी कैन स्टॉप आफ्टर दैट. बट हमारे इंडिया में तो ऐसा रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं होता. तो it is obviously, so it is better even after menopause to continue up to the age 65, but regularly उसके पहले तो काफी दिन तो रेगुलर होना चाहिए स्क्रीनिंग. So even after menopause it is advisable. It is advisable. Menopause माहवारी खत्म हो जाने के बाद भी ये टेस्ट, पैप स्मीयर टेस्ट कराते रहना चाहिए. So thank you doctor for all this very useful information, and I think it will be helpful for so many women, and thank you so much. Thank you.